Now the BJP is holding a protest. Let's go and see what is happening. The face-off is continuing in the parliament. What we see, remember, this comes just a day after Amit Shah addressed press conference, slamming the Congress for circulating the edited clip of his statement in Rajya Sabha. That the BJP maintains that it was the Congress who in fact had insulted Ambedkar throughout and sidelined his belief. Now, remember that we have seen back-to-back updates coming in. Right now, the BJP staging a protest. Those pictures are on your screen. Now, we have seen simultaneous protests taking place. The Congress also protesting. We saw this in the past few days. And now the BJP is protesting in the parliament, right outside the parliament complex. They are coming out in large numbers. Those pictures coming in for you as a face-off over B.R. Ambedkar continues. This coming in after we saw a fiery session where Congress MP Manikam Tagore had given an adjournment motion notice in Lok Sabha to discuss Union Home Minister's remarks regarding B.R. Ambedkar during the Constitution debate in Rajya Sabha. Now, this has got a lot of comments coming in. We have seen PM Modi also back Home Minister Amit Shah saying that it is a Congress who has been trying to hide the history and insult B.R. Ambedkar. Now, we will go ahead and play out what the reactions are saying because we're getting back-to-back reactions on the latest face-off over B.R. Ambedkar. इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा, यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर। My colleague, let's go to Riyanka, who's joining us live. And Riyanka, on one hand, in the past few days, you have seen the Congress, outside the Parliament complex staging a protest. Today, we see the BJP in large numbers, the MPs, they're coming out, they're also holding a protest, and they are saying time and again it was a Congress who tried to malign the name of B.R. Ambedkar. It was not them, and we are seeing a huge face-off erupt. Go ahead, Riyanka, what is happening?